हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में आपको देखने को मिला वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए जो आपको मिलेगा इसमें आपको रीड मिलेंगे और उस पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो पहले 20 एमसीक्यूज मिलेंगे, सारे क्वेश्चन बच्चों करके आना, एग्जाम में कोई छोड़ना नहीं है। एंड अभी से मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। सो रीडिंग पोर्शन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। To try is the first step of the ladder of success. If you do not try, you cannot be successful. All the great men of the world led very diligent lives. They did not waste even a minute, hence they could perform such glorious deeds. One who works is bound to reap the reward of one's efforts. And indolence is the way of ruin oneself. Therefore, one should give up indolence, and having girded up one's loin, should try access up the hill to success. अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, what should we do to get success in life? To get success in life, we should try for it. If we do not try, we cannot be successful. ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of life did the great men of the world did? The great men of the world led very diligent life. They did not waste even a minute, hence they could perform such glorious deeds. Next question आपसे पूछा गया, find out word in the passage which means destroy. तो ruin का मतलब होता है destroy. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है, फाइंड आउट द वर्ड पैसिव विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का जो अपोजिट है वो है ग्लोरियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे द यंग बॉय रेन अवे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो यंग है ना बच्चों, यंग बॉय, बॉय जवान है, ये इसका एडजेक्टिव है। कह रहे रामू वाज लेबरियस, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, वाज है। ठीक है, वाज है यहाँ पर, वर्ब है। द नाउन फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या होगा, स्ट्रेंथ। ठीक, ही इज ईगर डैश नोन हिज रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या है, ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट। सीता हैज गॉन टू स्कूल, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ ब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड। रामलाल एल्डर्स डॉटर वाज राधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पार्ट बी में, राइटिंग पोर्शन में, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, उसके बाद आएगा डेट, फिर लिखोगे माई डियर फादर, yesterday I received your letter. I was glad to read it. I am pleased to inform you that I stood first in my class in the annual examination. I have got the highest marks in all the subjects. My classes have started. I badly need certain books. My teachers have advised me to buy them. Besides, I have to buy some notebooks also. Please send me 2000 rupees urgently to buy them. Convey my best regards to dear mummy and love you. ठीक है, गोलू एंड रेनू लविंग योर लविंग सन, जो भी नाम होगा XYZ। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, ठीक है, और एड्रेस, डेट लिखोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, कई बच्चे ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आप भी कर सकते हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, humble submission, I beg to state that the marriage ceremony of my elder sister is going to be performed at residence on 23rd April. इतना डेट, जो भी डेट आप लिख सकते हो। I shall remain busy in the preparations of function, so I shall be unable to attend my classes for 5 days. You are therefore requested to grant me leave for 5 days from today. जिस देश से होगा उससे 5 दिन तक का डेट डाल दोगे। I shall be highly obligated to you. थैंकिंग यू, योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड्स में ऑफिशियली पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, और इस साल पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राइट अ रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 to 80 words on the basics of the hints given below.
decoration of school building, flag hosting ceremony, singing of national anthem, organization cultural programs, principal speech, distribution of sweets. तो यहाँ लिख देंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन और जिसने लिखा है, जैसे तुम्हारा नाम होगा भाई अमन कुमार, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे आगरा और डेट लिख दोगे यहाँ पर 15 अगस्त। MD Jain Inter College Agra enthusiastically celebrated the 74th Independence Day of the country on 15th August, इतना डेट को। On this auspicious occasion, a grand function was held in the college campus. This year, great preparations were made for the Independence Day celebration in our college. The college building and the ground were cleaned and decorated. Entertainment programs were organized. At 8 a.m., we assembled the prayer ground. The principal hosted the national flag. The national anthem was sung. We all saluted the flag. Our principal read out the message of the education minister. Then, turned by many students, gave their speeches. Some students sang patriotic songs on the occasions. Some teachers also delivered their speeches. In the end, the principal gave an impressive speech. He told us importance of the day. The atmosphere was filled with a feeling of pride and patriotism. At about 11 a.m., the function was over. After taking sweets, we returned to our home happily. ठीक है। या फिर राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। इंट्रोडक्शन देना है आपको, लास्ट में कंक्लूजन देना है। कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे अलॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन और स्टडीज़। तो सबसे पहले आ जाएंगे, टॉपिक लिखोगे द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज बाई, जिसका आपका नाम आ जाएगा। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज अ फेमस प्रूव. Physical exercise is necessary for sound body. Physical exercise means the movement of the limbs of your body. It is good for health. Without it, can enjoy good health. Physical exercise preserves and improves our health. It keeps our body active. It makes a man strong and keeps him free from disease. Our body is like a machine. It can be kept in good condition by doing physical exercises. There is a close connection between the mind and the body. Physical exercise is a cure for many diseases. For good health, it is not enough to eat only good food. The food must be digested. For this reason, some kind of physical exercise is necessary. Physical exercise is very important for student. It develops their focus and concentration power. Physical exercise refreshes their brain. It makes them cheerful and helps them to excel in their studies. Good health is the root of happiness, so we should do physical exercise regularly. It keeps the body fit and healthy. ये आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। पार्ट सी पे आ जाते हैं अब। कह रहे हैं चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स अगेंस्ट देम। रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो रेखा एडवाइस मी टू बिहेव प्रॉपरली, ऐसा हो जाएगा। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एन एप्लीकेशन फॉर लीव इज बीइंग रिटन बाय शीला। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग द कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। रीता सेड रेखा हरी विल नॉट कम कॉलेज टुमारो। तो रीता का पहला लेटर कैपिटल होगा, सेड टू रेखा, रेखा का भी पहला बड़ा होगा, हरी का भी बड़ा होगा, विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड्स। ही लॉट ए मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या आ जाएगा, करेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैन ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आजकल खेती एक प्रकार का व्यवसाय है। नाउ डिस फार्मिंग इज ऑल्सो बिकम ए सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। फार्मर्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड्स। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड्स डे एंड नाइट। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। अबाउट 80% ऑफ द फार्मर्स लेट देयर लाइफ्स इन पॉवर्टी। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड गिव इनफ हेल्प टू फार्मर्स। पार्ट डी में आ जाते हैं। कैन रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आई न्यू दैट अपियर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली as opposed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred.
He locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who according to Mandela is not free? According to Mandela, a man who takes away another man's freedom is not free. Who are robbed of their humanity? The oppressed and the oppressor both are robbed of their humanity. ये आंसर आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. Answer from the following question in about 60 words. How did hailstorm affect the field of Lancho? The Lancho was a poor farmer. He lived with the family in a lonely house at the top of low hill in the entire valley. His field was full of rip, calm and easily visible from the house. He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest so that he could earn money for his family. Finally, as Lancho has experienced, it started raining and the time of supper. This made Lancho very happy. He went outside to feel the rain on his body. The raindrops falling from the sky were like a new coin for Lancho. However, suddenly strong winds began to blow and hailstorm started to fall. है ना, ओले गिरने लगे. The storm continued for about an hour. The field was covered with a snow like a layer of white salt. Not a leaf remained on the trees. The flowers were gone from the plants and the crop was completely destroyed. उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई. Why did Anne Frank maintain a diary? Anne Frank was a 13-year-old smart and intelligent girl. She felt lonely because she did not have any friend to talk. Though Anne had a loving family, she had parents, 16-year-old sister, aunts and sweet home. There were about 30 people whom she could call friends, but she could only talk to them about ordinary things. She could not go about because of invention of German over Holland. She always felt suffocated. She felt the lack of true friend. There was no friend so close to her with whom she could share her secrets. She wanted to share her experience, feeling and emotions to someone. One day while she was feeling a little depressed and lonely at home, she thought the paper has more patience than people. Therefore, she decided to maintain a diary and share her experience, happening and tales with it. उसने सोचा कि अब यही मेरी दोस्त हुई, इससे मैं अपनी सारी बातें शेयर किया करूँगी डायरी के फॉर्म में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स. वेयर वाज स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स. देखो, sweets and snacks were prepared on a special occasion in the old Portuguese days in Goa. They prepared sweets bread called bol as marriage gift, bread for a party as a feast, sandwiches for daughters' engagement, and cakes and bolins for Christmas. ये हो जाएगा. What is Coorg famous for? Coorg famous किस लिए था? Coorg is the smallest district of Karnataka that is famous of the land of rolling hills because the hills are neither steep or nor very high. The Brahmagiri Hills is the most famous hills of Coorg. It is also famous for the coffee estate, evergreen rainforest and species. Its 30% area is covered with evergreen forest. इसलिए बहुत फेमस है. What was Valley's favorite past time? ठीक है. तो Wally was the 8 years old girl. She had no playmates of her age, so her favorite pastime was to stand the front of the door of the house and enjoy this happening in the street. ठीक है. दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी और उसके घर के सामने जो होता था वो देखती थी. आपको मैथ्स करना है इसमें, तो मैथ प्रॉपर मैथ्स क्या होगा? नो लॉन्गर का हो जाएगा नो मोर. ठीक है. सोशिएबल का हो जाएगा फ्रेंडली एंड अवॉर्डेड का हो जाएगा गिव. कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. He should be lurking in shadow, studying through long paths near the water hole where plump deer pass. So हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, where did the tiger wait for his prey? The tiger waited for his prey in the shadows of the long grass near the water hole where the fat deer came to drink water. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, point out the rhyming words in the stanza. The grass
rhymes with word pass, grass and pass, ये rhyming words हैं. Next, write the central idea of one of the following poems, Fire and Ice or Animals. Fire and Ice के क्या कहता है? In this poem, the poet Robert Frost expresses the idea that world would end in either of two ways, by fire or by ice. Fire symbolizes human desires, greed, cruelty, ice, etc. The more you satisfy them, the more they grow. They would spread like wildfire and engulf your whole life. On the other hand, ice symbolizes indifference in human relationship, hatred, coldness, and rigidity. The poet has the view that both the fire and ice equally competent in bringing the world to a complete end. ठीक है, इनसे एक दिन पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग. एनिमल्स का क्या है? इन दिस पोएम वाल्ट वाइटमैन हैज ब्यूटिफुली बॉट आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन. देखो, जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखोगे ना, तो पोएट का नाम जरूर लिखना है, ध्यान रखिएगा. Animals and human beings. According to him, animals are better than human beings and have all the qualities that human lack of have forgotten. The poem shows the poet's love for animals and his desires to live as animals because he thinks that they are serene and self-connected. He believes that probably a very long time ago, human possessed all these qualities, but they have lost them now. बहुत टाइम पहले इंसानों के पास सारी क्वालिटीज थी, बट अब कुछ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. राइट 4 लाइन्स पोएम लिखनी है आपको. पोएम लिखने के लिए हर साल आता है, जो वो पोएम लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो. ठीक है, तो ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एजेस, बेरिंग हिज वाइट फैंस, हिज क्लॉज, टेररिजिंग द विलेज बाई लिजर नॉरिस. ये हमने एक पोएम लिख दिया 4 लाइन की, छोटी सी एक कविता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What was the only way to save Tricky? The only way to save Tricky was get him out of the house for some time. He urgently needed to be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. What kind of theft Hari Singh was? Hari Singh किस तरीके का चोर था? Hari Singh was an experienced and successful thief. He knew how to win others' trust. He was so clean and cautious in his works that he robbed people without being caught. Next question है, how did Griffin save himself from Mrs. Hall? So to save himself, Griffin threw off bandages, whiskers and spectacles and even nose. Then he became headless before the people. When Mr. Jaffers, the constable, came to arrest him, he threw off his clothes and also became invisible. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग 60 वर्ड्स में आंसर देना है. व्हाट रोल डिड एब्राइट मदर प्ले इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट? एब्राइट्स मदर प्लेड अ ह्यूज रोल इन मेकिंग हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट. ही वॉज अ सिंगल चाइल्ड. आफ्टर हिज फादर डेथ, हिज मदर मेड हिम द फोकस ऑफ हर लाइफ. शी वुड बाय हिम ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, telescopes and other equipment. After dinner, she gave him problem to solve. This helps him to learn a lot. She was his only companion for a long time. She always tried to give him work required no physical labor but enhance his learning skill. It was his mother who got him the book The Travel of Monarch X. This book opened his world of science to him. She also wrote to Dr. Urquhart to guide her son. The scientist helped Richard Albright and guided him. Thus, his mother shaped him into an extraordinary scientist. Give a characteristics of Matilda. Matilda is a pretty young lady. She wanted to lead a rich, luxurious life, but she was born into a humble family and had to marry an ordinary man. She felt sad about her pretty economic and social status. When Matilda got an invitation to ball party, she wanted to present herself as a rich woman. She gave in to vanity. She disregarded the advice of her good husband. She is a woman who sought the praise and admiration of others. She feels very happy when a man appreciated her beauty and grace at the dance ball. Matilda is a
woman lacking wisdom and prudence just to show off at the ball. She loses her borrowed necklace. This leads to enormous suffering to for her and her husband for a number of years. She does not understand the importance of living within one means. ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है. मटिल्डा बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड. ट्रू. रिचर्ड अब्राइट लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. फॉल्स. ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं. तो इस तरीके से ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया. बाकी सब कुछ मैंने अच्छा पढ़ाई रखा है, आप देख सकते हैं. लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे. जय हिंद. सबको पेपर के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट.